This is second regular bail application. जी. The applicant has been charged under Section 8, 21 and 22 of the NDPS Act and Section 5 read with 13 of MP Drug Control Act, Lordship. The first bail application, Lordship, was withdrawn. जी. The applicant has been in custody since 29th of January 2022, Lordship. 1280 सीसी है. 1280 CC. जी. Now, the role of the applicant was that, Lordship, जी. he was just present in the car. जी. He was riding on the seat, which is just beside the driver's seat, Lordship. The driver is co-accused Vishnu Dwaj Singh, and the owner of the car was also in the car. He is Kuldeep Saket. जी. Lordship, my submission is there are two submissions, Lordship. One, that the seizure witness has turned hostile, Lordship. I have presented his statement. तो इनके सारे witness hostile हो जाते हैं. That they are required to introspect. All their seizure witnesses are hostile. I have not come across a single case जहाँ seizure witnesses support किया हो. इसीलिए शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है आईओ के बयान बड़े अहम रहेंगे. अहम रहेंगे, Lordship, but not conclusive, Lordship. Apart from that, Lordship, my second submission is that according to the case of Avtar Singh, Lordship, 2002, volume 7, 419, जी. this is the judgment, Lordship. It talks about, Lordship, about the conscious possession जी. of the substance. जी. Starts talking about the scope of section 313. Over here, Lordship, even I am making the same submission. The driver was in the vehicle. Owner was in the vehicle. Owner was. आप क्या gratuitous passenger थे? ये जो जजमेंट की थीम है वो ये है कि अगर कोई लेबरर बैठा हुआ है जिसको नहीं मालूम कि उसको क्या सामान उतारना है तो सिर्फ ये मालूम है कि जगत सिंह साहब का सामान ट्रक में जा रहा है, मुझे उसको उतारना है. ठीक है. Then he cannot be said to be an accused because he was neither having constructive custody nor the actual custody. This is the ratio of the law laid down in this case. Exactly. अब आपको अपनी हैसियत बतानी पड़ेगी. आप किस हैसियत से बैठे थे गाड़ी में? आपने लिफ्ट ली थी, आप ग्रेजुएट पैसेंजर थे. Lordship, I had taken a lift because. अच्छा, कहाँ आया है आपका? Lordship, मेमोरेंडम में पढ़िए. चलिए इनका मेमोरेंडम पढ़िए. Lordship, memorandum will always be against me. In fact, I will. अरे इतना तो आएगा कि मैं इस गाड़ी में फलानी जगह से बैठा फलानी जगह पे उतरने के लिए. I in fact myself submit, Lordship, that the memorandum of the present applicant is similar to the co-accused persons, whereby he has declared that he purchased this the substance from a shop in the UP, which he does not remember which shop was it. Thereafter, they have kept the substance within the trunk of the car and beneath the back seat of the car. And he himself shows that if you come along, I will show you the substance. That is what is there in the memorandum, Lordship. However, I submit that it is inadmissible. Apart from that, Lordship, the onus is on the prosecution. अभी आपकी गवाही कहाँ हुई है? अभी गवाही नहीं हुई, Lordship. गवाही होगी तब हम बताइएगा. Lordship, for that instance, Lordship, I have brought this one order of the High Court of Odisha, Lordship, whereby bail was discussed. मतलब 8 कार्टून में 1280 एस्केप नशीली सिरप पाई गई है सर. कीमत करीब 2,44,000 की और 3 एक्यूज हैं. ये बाजू वाली सीट पे बैठे हुए थे ड्राइवर की. ये तो उन्होंने खुद ही बता दिया. जी सर. और आप लोग जाकर ये इससे कितनी बार आपको बताना पड़ेगा? ना बैच नंबर से ना उससे ट्रेस नहीं करते कि कैसे ये दवाइयों का जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है. क्या अब कोर्ट बंद करके क्या इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है इसका शुरू कर दें क्या? हाउ दीज मेडिसिन्स आर given in custody of unauthorized persons who are neither pharmacists nor licensees.
नीचे मुंडी झुकाने से काम नहीं चलेगा, उत्तर देना पड़ेगा। आप तो बहुत अनुभवी हैं। सर इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें बैच नंबर है कि नहीं, वो ये देख रहा हूँ सर। सीज किया और बैच नंबर अगर नहीं लिखा तो वो भी गलती है आपके पुलिस की। दैट मीन्स दैट दे आर ट्राइंग टू सेव समबडी। बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, उससे पूरा 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 मटेरियल ट्रेस हो जाएगा। लिखा हुआ सर बैच नंबर। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने? जिसका बैच नंबर LE 8। मुझे बैच नंबर से मतलब नहीं है सर बैच नंबर को फिर कहां से ट्रेस किया इन्होंने? ये दवाई कहाँ गई थी? मैन्युफैक्चरर से स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट से किसको गई, और फिर वहां से ये कैसे निकली? पूरी चेन तो पकड़ी है आप चेन क्यों नहीं कंप्लीट करना चाहते हैं? जगत जी अभी वेट करिए, इनकी चेन पूरी करवा दें, उसके बाद में फिर आपको देखेंगे। प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव that the accused was custodian of goods, whether or not he was the proprietor. Full stop. To prove this, it is necessary that the IO should have traced the chain of possession from the manufacturer down the persons who were apprehended. Full stop. Shri Ajay Tamrakar admits that batch number of the drugs, that is codeine phosphate syrup, seized from the vehicle in which present applicant was traveling is known to the IO. It is mentioned in the seizure memo. Then IO was duty bound to approach the concerned manufacturer to know as to which stockist or wholesaler that batch was delivered, and thereafter should have traced the whole chain, that whether the material, the narcotic substance came in possession of the accused directly from the manufacturer or the wholesaler, or it was given to them by some retailer. And unless that chain is completed, then that will be a failure of the investigation in terms of the judgment of Honorable Supreme Court in Avtar Singh. Full stop. It is interesting to note, it is surprising to note that IO has not taken any steps in this direction. Motive cannot be gathered at the present, but incompetency is writ large. इसमें सर ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का है ब्यौरा सर जी, मैन्युफैक्चरिंग और कहाँ से हुई है उसका ब्यौरा लगा हुआ है सर इसमें। उससे तो हमें भी मालूम है, तो कभी कंपनी का कोई भी बॉटल दवाई उठाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कौन मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर है कि मार्केटिंग कर रहा है, हर दवाई पे लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो, मार्केटेड बाय सो एंड सो। और कुछ कंपनियां बड़ी रहती हैं, उनकी मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आपने क्या किया? आप जो ये बता रहे हैं हमको एट दिस स्टेज ये भी लिखा दीजिए। Shri Ajay Tamrakar submits that name of the manufacturer is mentioned in the seizure memo, but the steps taken thereafter are not mentioned in the case diary. ठीक है जी सर। At this stage, since some more witnesses are required to be examined, Shri Jagat Singh does not press for the merit पे चाहते हैं कि press नहीं करे? आप क्या चाहो लिखूंगा? Withdrawal. हाँ, press for withdrawal of the application. However, IO of the case will be obliged to take permission from the competent court and investigate the matter in the light of the chain in such a manner so to complete the chain of delivery of narcotic substance to the present applicant, and shall investigate the role of each and every person in that chain. ठीक है सर। नंबर 3 वर्मा, आपने अच्छी बहस करी, लेकिन I understand.